Welcome back, students. Today is the session 2 from the playlist of friction, and today we will be just discussing about uh, the types of frictions which we normally encounter when an object is in motion or when it is subjected to some external force. So यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फिगर यहाँ भी बनाया है. This is a block, ठीक है, having some mass, and this is lying on a horizontal surface, and let us say it is having the coefficient of friction, okay, which is let us say it is equal to let us say mu s, okay. So the coefficient of friction between this block and this surface is mu s, and the let us say the mass of this block is m, okay. So the weight of this block will be acting in the downward direction, and a normal reaction will act in this upward direction, which will balance the weight of this block. Okay, let us denote it by n, and this normal reaction is due to the surface on which this block is lying. तो अभी क्या है, इस ब्लॉक के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है. It is simply lying on this surface, and its weight is being balanced by this normal reaction. So we can say this normal reaction n is equal to mg. So in this case, the static friction will be equal to 0, because static friction comes into play when any object is subjected to some net external force. ठीक है. अभी यहाँ पे जो है external force जो है आपका, the net external force in this case is 0. Now let us apply some force, let us say F, in this direction. So as soon as we apply some external force to this body, the static friction will be generated. Okay? And this static friction will oppose the relative motion between this block and the surface. That is, or in other words, the static friction will act in this opposite direction, and this static friction will prevent this object from moving forward. So let us denote this static friction as Fs. So now this static friction जो है, ये इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है. दिस जो है इसकी एक ना लिमिटिंग वैल्यू होती है, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. This Fs has a limiting value which is called limiting friction. Limiting friction, and it is normally denoted by Fl. So इसका मतलब क्या है कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का, दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन. नाउ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज generated when the body is on the verge of moving forward. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इफ आई ये मैंने फोर्स लगाया बॉडी के ऊपर. So what will happen? For example, just trying to explain you with the help of an example. Let us say the limiting value of the friction is, let us say, 10 Newton. Now, if I apply a force of, let's say, 8 Newton, okay, so what will happen? This static friction will generate this frictional force in this opposite direction, and its magnitude will be equal to 8 Newton. And in this way, what will happen? This body will remain in its position. अब मैंने फिर से फोर्स बढ़ा दिया, लेट अस से मैंने इसको कर दिया 9 न्यूटन. तो क्या होगा? ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो 9 न्यूटन हो जाएगी, एंड द बॉडी विल स्टिल रिमेन इन इट्स पोजिशन. नाउ अब मैंने इसके फोर्स फिर से बढ़ाया, लेट अस से इसको मैंने 10 न्यूटन कर दिया. So what will happen? The value of the static friction will
be equal to the this limiting friction. Limiting friction मतलब है कि this is the maximum value of the static friction which can be generated for this combination of this surface and the mass. एक पर्टिकुलर मास के लिए और एक पर्टिकुलर सरफेस के लिए एक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है जो कि विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, इससे ज्यादा अगर आपका अप्लाइड फोर्स होता है, इफ यू अप्लाई द फोर्स विच इज मोर देन दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग. एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है इसमें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन. एंड this limiting friction is you can say generated at the point when the body is about to move forward. उस पॉइंट पे जैसे जैसे हम ये फोर्स को वैल्यू बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल अभी 8 न्यूटन है, फिर मैं इसको 9 करूंगा तो 9 पे भी रुका रहेगा, 10 न्यूटन पे भी ये बॉडी रुकी रहेगी, बिकॉज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज व्हाट 10 न्यूटन. ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन. इससे ज्यादा जब होगी then this body will start moving. So limiting friction is generated at the point when the body is just about to move forward. ठीक है, जैसे ही हमारा ये फोर्स 10 न्यूटन से ऊपर होगा, then this body will start moving forward, and when the body starts moving forward, then this limiting friction gets converted into the kinetic friction. यहाँ जो लिखा हुआ है, that is kinetic friction comes into play when the body starts to slide over the surface of another body. ठीक है, ये so ये एक मैंने एग्जांपल से समझाया हुआ है कि इट्स नॉट दैट कि ये FL जो है वो 10 न्यूटन ही होता है. दिस इज आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक, लिमिटिंग एंड द काइनेटिक फ्रिक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. द स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट एज पर दी अप्लाइड फोर्स. अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से कम है तो क्या होगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो आपकी होगी. मतलब अगर ये 8 न्यूटन मैंने यहाँ फोर्स लगाया है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की भी जो दैट मैग्नीट्यूड होगा वो भी 8 न्यूटन होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, व्हेन आई एम जस्ट टॉकिंग विद रेफरेंस टू दिस एग्जांपल, when this limiting friction की जो वैल्यू है इट इज 10 न्यूटन. 10 न्यूटन से ऊपर अगर होगा अप्लाइड फोर्स तो फ्रिक्शन की जो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इससे ज्यादा अगर हो जाएगा देन बॉडी विल स्टार्ट मूविंग. सो दी स्टैटिक फ्रिक्शन, the value of the static friction automatically gets adjusted डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यू ऑफ द अप्लाइड फोर्स. ठीक है, अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जो है वो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो स्टैटिक जो फ्रिक्शन है उसकी भी मैग्नीट्यूड उसी के हिसाब से जो है वो आपकी होगी. मतलब अगर यहाँ पर मैंने मान लीजिए इस केस में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 10 न्यूटन है, मैंने फोर्स लगाया 8 न्यूटन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में 8 न्यूटन ही होगा. और जैसे ही मेरा अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन से ऊपर हो जाएगा, दैट इज इफ इट इज मोर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कैन बी जनरेटेड बाय दिस कॉम्बिनेशन. ठीक है, सो ये हो गया. एंड व्हेन दिस बॉडी स्टार्ट्स मूविंग देन वी से दैट दिस काइनेटिक फ्रिक्शन हैज कम इनटू प्ले, एंड दिस kinetic friction comes into play when the body starts to slide over the surface of another body. ठीक है, तो अच्छा now kinetic friction में जो static friction का जो coefficient of static friction होता है वो हम लोग लिखते हैं μs. limiting friction का जो coefficient of friction है उसको हम लोग लिखते हैं μl. और जो kinetic friction का जो coefficient of this kinetic friction होता है, in case of the kinetic friction the coefficient of kinetic friction is mu k. In case of static friction the coefficient of this is static friction is mu s, and in the case of limiting friction the coefficient of limiting friction is mu l. ठीक है, so now based on these three ये जो तीन जो definitions हमने अभी पढ़ी हैं उसके हिसाब से क्या होगा
कि the value of this coefficient of limiting friction is more than the value of the coefficient of kinetic friction. That is, जैसे ही बॉडी आगे मूव करती है then the value of the force of friction decreases. ठीक है, और you can say the force of, ये जो आपके limiting friction की जो वैल्यू है उससे वो कम हो जाती है. And so on, in other words we can say that the coefficient of this limiting friction is more than the coefficient of the kinetic friction. ठीक है ना, because you know that force of friction is dependent on mu, m and g. मास कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है. अब ये जो है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, ये जो वेरी करती है बिकॉज ऑफ दिस म्यू, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. जैसे अभी स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन दिया हुआ है. अब मैंने लगाया 8 न्यूटन का फोर्स. जब 8 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बॉडी क्या, नाउ व्हाट विल हैपन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी व्हिच विल एक्ट इन दिस अपोजिट डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 8 न्यूटन, so that the body remains in its position, because friction क्या है, it opposes the relative motion and it tries to keep the body at rest. So यहाँ पर क्या हो जाएगा उस केस में, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने फोर्स लगाया 8 न्यूटन का, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी 8 न्यूटन लगेगी पीछे, एंड मास मान लीजिए मैं इसका कहता हूँ इट इज m एंड g, तो ये हो जाएगा, इस जो म्यू की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई m इंटू जी. ठीक है, या सो दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो वेरिएशन होता है बाय दी ड्यू टू दिस एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स, वो डिपेंड करता है, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू जो है इट कीप्स ऑन वेरिंग बिकॉज ऑफ दी दिस वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ म्यू. ठीक है, जैसे अब अगर यहाँ पे 8 न्यूटन है तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जो है 8 न्यूटन हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू आपकी कुछ और मिलेगी. ठीक है, और अगर ये 9 न्यूटन हो जाएगी तो फिर म्यू की वैल्यू और कुछ हो जाएगी. सो बट हाउएवर दी बिकॉज लिमिटिंग फ्रिक्शन में की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है, तो इसलिए जो म्यू एल जो है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज मोर देन द कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, ये हो गया. अब एक और आता है रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन कब आता है, इट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ सर्कुलर बॉडी, एक सर्कुलर बॉडी है, एक सर्कुलर बॉडी है, मान लीजिए सरफेस है. ठीक है, ये एक सर्कुलर बॉडी है एंड दिस इज रोटेटिंग और इट इज रोलिंग ऑन दिस सरफेस. ठीक है, तो इन रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, दिस इज इट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ सर्कुलर बॉडी इज रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, एंड दिस इज गिवन, दिस रोलिंग फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन and inversely proportional to the radius of this object. Or we can say that Fr is equal to mu r n by r, where mu r is the coefficient of rolling friction. अब coefficient of rolling, अब यहाँ पर अगर हम रिलेशन बनाते हैं then mu l is greater than mu k and it is greater than mu r. इसकी वैल्यू सबसे कम होती है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन की सब वैल्यू जो सबसे कम होती है उससे ज्यादा आपकी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, एंड सबसे ज्यादा होगी आपकी दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है विच आई थिंक एवरीवन शुड रिमेंबर. एंड so these are the 4 types of the frictions which we normally encounter when a body is subjected to some external force or when the body is moving or on the surface of the other body. So these were the 4 types of frictions which I just wanted to discuss in brief today, and in the next session I will be now coming up with a few examples which will be related to the friction between the 2 blocks or 3 blocks.
ठीक है. So I will be discussing few examples where a block is, for example, these are the two blocks and they are lying, they are resting on a surface. So I will be discussing a few cases in which a force is applied on one block, and then there are many types of questions which are generated in which they ask that whether both the blocks will move together or not, and if they are moving together, then what will be their common acceleration, and 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 second thing, sometimes the force is applied on this lower block, and sometimes the force is applied on the block which is kept on on the uh, the surface of this the other block. So we will be just discussing a couple of examples where we will be trying to analyze the force of friction, and how it um, opposes the relative motion between the two or three objects. Okay, so this is all I have for today's session, and thank you very much for joining, and I hope to I hope that you have understood what I have tried to explain here. It was a very small session, and I just wanted to discuss the different types of frictions only. In the next session will be important, because in that session I will be discussing the friction on a system of blocks, okay, which are kept over one another. So thank you very much and have a nice day.